co-powered by Techno. And since Mr. Sundaresan, you are with us, I think I should congratulate you क्योंकि वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के जो मंथली नंबर्स आए हैं उन्होंने आपके जो गोल्ड ETF है निपॉन इंडिया गोल्ड को अगस्त के दौरान खरीद के मामले में दुनिया के 8th बड़े गोल्ड ETF में शामिल किया है। वो लिस्ट में आप अब 8th पोजीशन पर हैं। मैनी कंग्रेचुलेशंस। निपॉन इंडिया गोल्ड ETF ने अगस्त के दौरान करीब 2.25 टन गोल्ड की खरीद की है और अगस्त में इसकी गोल्ड होल्डिंग में अब 8% की हम बढ़ोतरी देख रहे हैं। कुल गोल्ड होल्डिंग के मामले में निपॉन इंडिया का जो गोल्ड ETF है ये दुनिया का 10th लार्जेस्ट गोल्ड ETF बन गया है। और बीते एक साल में अगर हम रिटर्न्स को देखें तो एक जो कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ दिख रहा है इस ETF का वो रहा है 20%, टू बी मोर प्रिसाइज 19.72%। अभी इनका AUM जो है वो 12,737 करोड़ का है। तो ETFs जो होते हैं वो 98% से ज़्यादा निवेश फिजिकल गोल्ड में करते हैं और इस पर भी मैं थोड़ा सा व्यू आपका लेना चाहूँगी। अरुण सुंदरेशन हेड निपॉन इंडिया ETF मेरे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले तो बिग कंग्रेचुलेशन सर, आप लोगों ने आप अब जो है देश के सबसे पुराने और सबसे बड़े गोल्ड ETF बन गए हैं। अब अभी क्या हो रहा है कि हम देख रहे हैं सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को लेकर के सरकार से जो इंडिकेशंस मिल रहे हैं लग रहा है कि अब आएंगे नहीं। तो ऐसे में क्या आप देख रहे हैं ETF में इंटरेस्ट लोगों का बढ़ा है? क्योंकि एम्फी के भी नंबर्स यही बता रहे हैं कि अगस्त हैज बीन फैबुलस। Yeah, first of all, thank you very much. Like you rightly pointed out, we run the largest gold fund in the country, and even in terms of the pecking order across the world, we are amongst the top. Now we've reached top 10. Yes. And we are seeing, continuous interest month on month. We are seeing, inflows coming in. So gold ka, I'll come to the sovereign bond issue a little later, but even otherwise, gold prices have been doing well for quite some time now. Broadly, इसमें 3 components है. One, central bank buying, जैसा हमारा RBI है, likewise, global central banks है. They've been buying quite on the higher side, in the recent past, possibly because there are a lot of geopolitical tension and a lot of uncertainties, and they may want to diversify their holdings away from only their own currencies or paper currencies to something like physical gold. So एक component हो गया number 1. Second, जो physical demand है gold का, ज्वेलरी खरीदते हैं बाहर, so that's also been reasonably good, particularly in India. And the third is the investment part, investors investing in gold through ETFs. So this data again, you just showed this table, जो global funds है और India में भी inflows have been quite good. So last month, for example, almost 1,600 crores of net flows came in gold. So this is something that month on month again, the flows have been good. So things are good, as far as gold is concerned. All the 3 different parts are working, and sovereign gold we're not too sure as to what the government is planning, but sovereign gold or ETF, maybe there are differences. ETF is relatively more liquid. दोनों listed है, sovereign gold bond भी listed है, gold ETF also are listed on the stock exchange, but relatively the gold ETF product is more liquid. For example, अपना Nippon India gold ETF 20 में हर दिन we do something like 80-100 crores of volume. Sometimes it is even more. Whereas sovereign gold bond is one for very long term. It comes with 8-year lock-in. After 5 years you can sell, but on the exchange you can transact, but there the volume tends to be very low. So therefore, investors को अगर gold में invest करना है along with liquidity, अभी मैंने invest किया, जब भी मैंने exit करना है कर भी सकता हूँ. So if you are on that kind of investment approach, ETF format would be very appropriate. So I think that's where ETFs come in.
ओके, सो एम्फी के जो मंथली नंबर्स आते हैं उसमें भी यही नज़र आ रहा है कि अगस्त 2024 में 37,390 करोड़ रुपए का निवेश जो है वो गोल्ड ईटीएफ में अब आ चुका है, और अगस्त महीने में केवल रिकॉर्ड बना है 1,611 करोड़ का निवेश यहाँ पर आया है। आपने अभी एक लिक्विडिटी की बात की, सो क्या लिक्विडिटी इज़ वन रीज़न कि आप कहेंगे कि अगर गोल्ड में आपको इन्वेस्ट करना है, क्योंकि एक है फिजिकल गोल्ड हम लोग खरीदते हैं जो कि होता है कि भाई आप उसको वेरिएबिलिटी होती है, आप वो यूज़ करने के लिए, यूजेबिलिटी के लिए खरीदते हैं। जो लोग इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदना चाहते हैं तो आपको लगता है गोल्ड ईटीएफ क्यों उनको चुनना चाहिए? आप उनको कैसे कन्विंस करेंगे अगर आपको किसी को कन्विंस करना, और आप तो साउथ से आते हैं, सो आपके अरुण आपके इलाके में तो लोग बहुत गोल्ड खरीदते हैं, सो मुझे ये बताइए अगर आपको किसी को कन्विंस करना होगा सो आप कैसे कन्विंस करेंगे कि ज्वेलरी नहीं आप गोल्ड ईटीएफ चुनिए, और क्यों चुनिए आप? देखिए, आप गोल्ड ईटीएफ में भी ना से अगर आप गोल्ड ईटीएफ खरीद रहे हैं तो वील टेक मनी फ्रॉम यू एंड वी इन टर्न बाय गोल्ड, so your money is physically backed by gold, so we are issuing units to you which is backed by physical gold, and that gold is also as per regulation, itna purity hona hai, itna safety hona hai, all those things are taken care. So effectively instead of you investing in physical gold, आपको वो safe में रखना है, बड़ा बार और आपको याद रखना है, all those kind of things, right? Storage cost and concerns about safety, those things are not there, very very pure, and in turn what you are getting is gold return. तो अभी आपने अभी इन्वेस्ट किया, आफ्टर ईयर 2 years जब भी आप सेल कर रहे हो, गोल्ड का रिटर्न है माइनस एक्सपेंस एंड थोड़ा जो भी ऑपरेशनल है, so largely you get the gold return. So that's a big advantage. Of course, because it's listed on the stock exchange, you'll be able to sell it technically anytime. So today you buy, even after 2-3 days you want to sell, you can do that. Gold may sometimes physical gold you buy, when you go to sell you might face difficulty. Those things are not there as far as the gold ETF is concerned. जो भी returns है gold minus expenses and a few other things, you get that return, so it becomes very convenient, and that's why many investors are flocking to the ETF route. ओके, सो व्हाट यू सेड, अगर मैं इसे सम अप करना चाहूँ, प्योरिटी एक चीज़ है कि आपको प्योरिटी की कोई टेंशन नहीं होगी, आपको उसको रखने की उसकी सेफ्टी की कोई टेंशन नहीं होगी, गोल्ड का आपको इसमें रिटर्न मिल जाएगा, और लिक्विडिटी ये है कि आपको किसी ज्वेलर के पास जाकर बेचने की ज़रूरत नहीं है। ये मार्केट है जहाँ पर आप कभी जब भी चाहें इसको बेच या खरीद सकते हैं। सो अरुण, नाउ फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड एलोकेशन, आई वांट टू अंडरस्टैंड कि गोल्ड ईटीएफ में आप कितना एलोकेशन ओवरऑल पोर्टफोलियो में रखने की सलाह देते हैं? Gold generally is considered to be a good asset class to diversify your portfolio. So all this while we are talking about equity, there are different asset class, fixed income भी invest कर सकते हैं. So generally gold का behavior many times is different from many other asset classes. So we call it correlation. So basically it's a distinct asset class. तो हो सकता है, and it's happened many times in the past, that sometimes let's say equity market does not do well, even at that point in time gold could be doing well, which means that having gold in your portfolio balances out your return, it helps you diversify. So therefore with that context in mind, gold allocation is recommended, and the amount, kitna allocation, that can differ from investor to investor, but generally 10 to 15% of investments in gold is said to be a good number to help you diversify, and even the returns over a period of time, gold has exhibited reasonably good return profile. So without compromising your return profile, it will also add to your diversification. It will balance out your portfolio reasonably well. That number can be 10, 15, in some cases a little more as well. ओके, सो मैं रिटर्न पर बात करना चाहूँगी कि कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करें अगर कोई गोल्ड ईटीएफ जैसे प्रोडक्ट में निवेश करता है, क्योंकि हम निवेश तो इसीलिए करते हैं कि रिटर्न हमको चाहिए। सो आप थोड़ा सा रिटर्न के बारे में बताइए, पास्ट रिटर्न्स कैसे रहे और कैसे हम फ्यूचर में जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग मिस्टर सुंदरेशन, क्या आपको लग रहा है कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड अब जो है वो अब नए ट्रांच नहीं आने वाले हैं और गोल्ड ईटीएफ इज़ द न्यू वे?
So the past return everybody knows. आप भी बोल रहे थे अभी last 1 year return is close to 23%, and even 3 year, 5 year return is close to about 15%, which is past return. But in general, just like how equity में अभी past return है 30-35%, लेकिन अगर आपको expectation set कर रहा है तो generally we talk equity maybe 15% देगा, 12 to 15% देगा, like that. So likewise, gold, आपको maybe you should expect something like 10 to 12% over a longer period of time. लेकिन gold, all said and done, थोड़ा risky asset है. जैसा equity है, gold भी I would say equally, if not more risky than even equity, because इसका जो price movement is dependent on lot of factors. जो मैंने बोल रहा था, central bank buying, tomorrow there can be selling, investment demand ऊपर नीचे होता रहता है. Then various factors from interest rate movement to geopolitically what is happening, all of those things can have an influence, sometimes good, sometimes bad, on gold. So therefore gold जैसा equity है, risky asset है, price return can move up or down in the short term. Gold में भी आपको थोड़ा long term horizon रखना है, and mentally you should be prepared for the long term. And broadly, you can think about expecting 10 to 12% kind of return over a period of time. So I think that's a good number to go with. Okay, and sovereign gold bond, आप नहीं उस पे comment करना चाहेंगे? Sovereign gold, obviously, purely from a return perspective, because you get additional 2.5% return also. So gold plus that's a fantastic product. But on the downside, one, this is for very, very long term. So if you want to keep it for very long, you don't intend to take it for at least 5 years, ideally even for 8 years, then it makes sense. Otherwise, if you want to invest with a view that maybe at some point in time, 2 years, 3 years, 4 years, I could take out for various reasons, the ETF is a better format. With respect to whether there will be more tranches coming in, it is not very clearly known. There are indications that government may not issue more of the sovereign bonds, but we don't know. We'll have to wait and see. But nonetheless, ETFs have their own advantages, as we just spoke about. ओके सो एक बड़ा इवेंट जो सभी लोग वेट कर रहे हैं वो है यूएस का रेट कट. अब वो कितना होगा इस पर ज़रूर अभी भी सस्पेंस है, बट इस इवेंट का असर आप गोल्ड पर किस तरह से देखेंगे? So agar rate cut expectations have been around for a very long period of time now. So it was only the matter of timing, kab hoga, kitna hoga, how long will it go on, and stuff like that. But rate cut expectations had been in the market for a very long period of time, right? Uska reflection in different asset classes, including in gold, could have already happened. So that's the best part of beauty of the market. So market does not wait for a particular event to happen and then react to it. So they react in advance. So the fact that there will be rate cut at some point in time actually benefited gold. So to some extent, some of the returns that had happened in the past could also be basis this the expectation that there will be a rate cut. So there will, so obviously the FOMC meeting is, the discussions are already on, and very soon we'll hear about rate cut. So rate cut per se is a positive as far as gold is concerned, because technically, fundamentally speaking, dollar will, be weak because of that, and then so gold, that's the theory part. You feel कि वो factor in हो चुका है gold के prices में? Yeah, good part would be factored in. So we could not count on only that bit to expect that gold will go up further, but that's one of the reasons. But as I said, there are other fundamental reasons. So regardless of this, the global central banks across the world, they've been increasing their buying of gold. Because there are a lot of as we speak, there are two major wars which are going on. There are geopolitical tensions across the world. So they are like on an average, if they've been buying 400, 500 tons of gold every year, of late, they have doing twice of that in terms of the gold buying. So that is helping the investment demand through ETFs across the world. That's been fairly strong. So all of these things will have to be seen together
and not just one factor like the rate cut. While that is also a positive. सो गोल्ड इज ऑल सेट टू गो स्ट्रॉन्ग ओनली. बट अगर मैं आपसे पूछूं गोल्ड और सिल्वर में, अगर आपसे मैं पूछूं कहाँ इन्वेस्ट करना बेहतर होगा, तो क्या आप जवाब देंगे? तो दोनों commodities हैं, but they have different risk return characteristics. So gold is more like in a way, a diversification or a what can potentially work as a safe haven and stuff like that. जो crisis है उस time पे gold अच्छा करेगा, like that. Silver, on the other hand, has a slightly different risk return characteristics. मतलब silver का manufacturing में ज़्यादा usage है, including in latest technologies like in solar panels and mobile phones and many other technologies. Silver is actually a input. So if that part of the activity kind of keeps going on strongly, so that will fundamentally benefit silver. Silver ka last 1 year return be close to 20% hai. It's also done well, but going forward, between gold and silver, I would say silver is more aggressive in terms of potential risk and return. So the return potential is higher in silver, with all other things kept common. Gold say silver ka potential relatively is on the higher side, but that's how I'll put it. But these two are essentially different, even though they are commodities and precious commodities. Characteristics are very different. ऑल राइट, थैंक यू सो मच मिस्टर सुंदरेशन, आपने टाइम निकाला मनी 9 के लिए. बेस्ट ऑफ लक विथ योर न्यू एनएफओ, और मोमेंटम का एनएफओ लेकर आए हैं आप लोग. विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. 25 सितंबर तक वो खुला है, फिर रीओपन होगा अक्टूबर के सेकेंड वीक में. बेस्ट ऑफ लक विद दैट. और गोल्ड ETF में आपने नई ऊंचाइयां हासिल की है, बहुत बहुत मुबारक इसके लिए. शुक्रिया हमसे बात करने के लिए सर. शुक्रिया मैडम. Co-powered by Techno.